Good morning class. In today's class we discussed how to calculate mean in some special cases. There are five special cases. First is cumulative frequency distribution, in which the x value or the series is given like less than 0, less than 10, less than 20, less than 30, or more than 10, more than 20, more than 30. Okay, so this type of series is given in cumulative frequency distribution. Second one is mid value are given. In this, midpoint of the class interval means 0 to 10, 10 to 20. So there is a midpoint between these series are given in the mid value. Third one is inclusive class interval. In inclusive class interval, the class time is 10 to 19, 20 to 19, means this upper limit is not repeat in the next series. Okay, and the fourth one is open end series. In this type of series, lower limit of the first class and upper limit of the last class. यानी कि जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी means 0 to 10 or 10 to 20 means 0 value is not given, and the upper last class and the last class are not given. Upper limit means जो last class is suppose 60 to 70. Okay, so 70 is missing in that type of class interval. And the last is unequal class interval, when the intervals are not equal. जब आपकी class intervals जो है equal नहीं होगी. Suppose this is 10 to 20, this is 20 to 40, means there is a gap. There is a difference between 10 to 20 is 10, but in next series there is a difference between the 20 to 40 is 20, means the class intervals are not equal. Okay, so one by one we discussed in detail. First we discussed in cumulative frequency distribution. First one is cumulative frequency distribution. Means less than or more than. Okay, so write down under the cumulative frequency distribution, when the data is given in the form of less than or more than. जब आपको डाटा दे रखा होगा कैसे करके, सपोज less than 10, less than 20, less than 30, and in case of more than means more than 10, more than 20, more than 30. Okay, for all items in the series it is called cumulative frequency distribution. तब हम उसको क्या बोलते हैं, cumulative frequency distribution बोलते हैं. To calculate the arithmetic mean कैलकुलेट करने के लिए such cumulative frequency distribution has to be converted into simple frequency distribution. तो जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है वो आपको क्या दे रखी होती है, क्लास इंटरवल के साथ cumulative frequency distribution दिया हुआ होता है, मींस CF, जिसको आप कन्वर्ट करते हैं इसमें सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. So let us understand with the example. In question, आपको क्लास इंटरवल दे रखा है.
more than 0, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, and the last is more than. Okay, and the number of students, always be remember that, हमेशा याद रखना, when there is a cumulative frequency distribution, जब आपको cumulative frequency distribution दे रखी होगी, means in the form of less than or more than, so this column is not a simple frequency distribution column, it is a cumulative frequency. Okay, 50, 45, 38, 26, 10 and 4. So now there is a solution of this exam. First हमें क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, मींस x वैल्यू दे रखी है, क्लास इंटरवल ओके, मोर देन 0, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 0, 10, 20, 30, 40, 10 का क्या है डिफरेंस है। मोर देन 0 मींस 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा नेक्स्ट कहां आ रहा है, 10 मींस 0 to 10। नेक्स्ट मोर देन 10 मींस 10 to 20। नेक्स्ट 20 to 30, next 30 to 40, next 40 to 50, and the last is more than 50 is means 50 to 60. Okay, and the number of students, this is a cumulative frequency means CF. Okay, so CF is 50, 45, 38, 26, 10 and 4. Firstly, we calculate the mean value between the class interval. हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास इंटरवल के बीच में से जो भी हमारी मिड वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। तो मिड वैल्यू को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं, L1 plus L2 upon 2 means this value plus this value divided by 2. So the mid value is 5, 15, 25, 35, 45 and this one is 55. Okay, next step is according to the formula of calculating mean is A plus sigma f b dash upon sigma f into I और C, है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, A, ठीक है ना। हम किसी भी एक वैल्यू को इसमें क्या कर लेंगे, A एज्यूम कर लेंगे। सपोज हमने 25 वैल्यू को क्या कर लिया, A एज्यूम कर लिया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप इज सिग्मा f b डैश। अब b डैश कैलकुलेट करने से पहले हमें चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी चाहिए, बट हमारे पास दे क्या गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम किसे कन्वर्ट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो मींस मोर देन 0 और मोर देन 10 करके दे रखा था, तो मींस सबसे पहले हम जो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट 45 minus 38 7, 38 minus
12. 26 minus 10, 16. And 10 minus 4, 6. अब लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हमारे पास लास्ट स्टेप नहीं है, तो हम उसको क्या एज्यूम कर लेंगे, द लास्ट वैल्यू इज 0, so 4 minus 0 is 4. Okay, so this is a frequency. Okay, so now we calculate d dash. तो d dash कैलकुलेट करने से पहले हमें चाहिए क्या, d की वैल्यू चाहिए, वो कैसे आएगी, x माइनस a से। मींस जो हमने हमारी x वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, जो हमने a एज्यूम किया है उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मींस 5 minus 25 minus 20, 15 minus 25 minus 10, 25 minus 25 0, 35 minus 25 10, 45 minus 25 20, and 55 minus 25 30. Now we have a need to calculate d dash. D dash, how to calculate, d upon c. Okay, d upon c. C is the difference between the class interval, or we calculate the SCF of the D column. So the difference is 10 in all the series. So C is 10, A is 25. Now we calculate the D dash, minus 20 upon 10, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and 3. यानी कि जो भी हमारी d की वैल्यू है हम सबको क्या कर देंगे, c या i से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, मींस द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल इज 10, so the value of c is 10. Now according to the formula we calculate f d dash, means the multiplication of frequency into d dash column. Frequency is 5 minus 2 minus 10, 7 minus 1 minus 7, 12 multiply 0 0, 16 multiply 1 16, 6 multiply 2 12, and 4 multiply 3 12. 12 plus 12 24, 24 plus 16 40, 40 minus 17, 40 minus 17 मींस 23 क्या आ गया हमारा, प्लस का आ गया। तो सिग्मा एफ डैश का टोटल हमारा क्या है, 23, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी नीड द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 5 plus 7 12, 12 plus 12 24, 24 plus 16 40, 40 plus 6 46, and plus 4 50. So the total of frequency column is 50. Now we put the value of all according to this formula. A value is 25 plus the total of sigma FD dash column is 23, and the total of sigma F is 15 multiply 10. The value of C is 10. Now we calculate this, 25 plus 2.6. When we calculate this, so the value is 2.6. So now the mean value is 27.6. So 24, 25 is 4 is 29.6. So the value of mean is 29.6 marks. Okay. This is a calculation of mean by the cumulative frequency of the y class interval is given like more
ये याद रखिएगा, जब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा मोर देन 10 मोर देन 30, तब जो हमारे वैल्यू, जो हमारे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे होंगे वो क्या दे रखे होंगे, CF दे रखे होंगे, मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तब हम फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको सेकंड वैल्यू से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब हमारी फ्रीक्वेंसी की क्या आएगी, फर्स्ट वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ लेस देन there is a difference between the calculation of frequency, तब हम फ्रीक्वेंसी जो है अलग तरीके से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। This is a question less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60 and less than 70. And number of students mean the cumulative frequency is given 5, 22, 48, 60, 83 and 100. So less than 20 means the difference between these all numbers are 10. So less than 20 is 10 to 20. Next, less than 30 is 20 to 30. Less than 40 is 30 to 40. Less than 50 is 40 to 50. Less than 60 is 50 to 60. And less than 70 is 60 to 70. And in question, cumulative frequency is given 5, 48, 60, 83 and 100. This is a cumulative frequency. So according to the step by step, first we have to calculate the value of x. X is the mid value of the class interval, means L1 plus L2 upon 2, means 10 plus 20 divided by 2. So the mid value between the 10 and 20 is 15, 20 to 30 is 25, 35, 45, 55 and 65. Okay, now we have a need to calculate the value of frequency. So when the question is given like less than 20, so the first value of frequency is same as the value of CF. Now we divided this value by the other value of CF, means 5 minus 22, 17. Next, 17 minus 48. Sorry, first value is 5. Now second value, how we calculate? 22 minus 5 means 17. Next, 48 minus 22 means 26. Next, 60 minus 42, 12. 83 minus 60, 23. 100 minus 83, 70. So this is the frequency calculation. First value is same as CF. Now second value, how we calculate? 22 minus 5, 17. 48 minus 22, 26. 60 minus 48, 12. 83 minus 16, 23. And 100 minus 83 is 30. Now there is a need of calculate D. हम सबसे पहले क्या करेंगे, D को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन D को कैलकुलेट करने से हम x में से किसी भी एक वैल्यू को क्या कर लेंगे, a एज्यूम कर लेंगे। हमने क्या किया, 45 को एज्यूम किया। आप किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, a एज्यूम कर सकते हैं। सो 15 minus 45 minus 30, 25 minus 45 minus 20,
35 minus 45 minus 10, 45 minus 45 0, 55 minus 45 10, 65 minus 45 20. Now D dash is the column of D is divided by the C value is the difference between the class interval. So the difference between the class interval is 10. So minus 30 divided by 10 minus 3, minus 20 divided by 10 minus 2, minus 1 0 1 and 2. Now the second step is FD dash, means the multiplication of frequency column into D dash column, means 5 minus 3 minus 15, 17 minus 2 minus 34, 26 multiply minus 1 minus 26, 12 multiply 0 0, 23 multiply 1 23 and 17 multiply 2 34. Now according to the formula we have a value of A, that is 45. Next, sigma FD dash, means the total of FD dash column. So the total of FD dash column is minus 18. Okay. Now the next step is sigma F, means total of frequency. So the total of frequency is 100, and we know the value of I or C is the difference between the class interval, that is 10. So we put the value in this formula, 45 plus the total of sigma FD dash is minus 18 upon the total of sigma F is 100 into the I value is 10, means mean is equal to 45 plus, and when we calculate this, so it comes as minus 1.8. अब हम क्या करेंगे, we open this bracket, इस bracket को ओपन करेंगे, then plus minus is minus 1.8. So the value of mean is 43.2 marks. Okay, so this is a calculation of when cumulative frequency is less than. Okay, next step is or the next special cases. Second special cases when mid values are given. जब हमें क्या दे रखी होगी, mid value given दे रखी होगी. Okay, when mid value are given in the question of the continuous series, जब हमें continuous series means जो भी हमारे क्लास इंटरवल्स होंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इनकी हमें क्या दे रखी होगी, mid value दे रखी होगी. Then same method will be used to calculate arithmetic mean as used in discrete series. तब जब हम discrete series में मेथड यूज कर रहे थे, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, उसी मेथड को यूज करेंगे. सपोज एग्जांपल, लेट अस अंडरस्टैंड एग्जांपल. आपको मिड वैल्यू दे रखी है, यानी कि x दे रखा है आपको, फाइव 15 5 15
नाउ आपको साथ में क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 8 10, 4 8 10 6 एंड 2। अब आपको क्या करना है, जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट कर रहे थे सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है। सो हियर द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन मींस इज a प्लस सिग्मा f b डैश अपॉन सिग्मा f। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मीन अंडर द डिस्क्रीट सीरीज। ओके, at b dash into c or I. So according to the formula, firstly we assume a in this series, हम इस सीरीज में से किसी को भी क्या कर लेंगे, a assume कर लेंगे। ओके, अब now we calculate the value of d means x minus a। 5 minus 25 minus 20, 15 minus 25 minus 10, 25 minus 25 0, 35 minus 25 plus का 10 and 45 minus 25 plus का 20। Now there is a need of calculating d dash means d upon c. The value of c is the difference between these is 10. Okay, so means minus 20 upon 10 minus 2 minus 1 0 1 and 2. Now we have a need of f d dash means the multiplication of frequency into d dash column means 4 minus 2 minus 8, 8 minus 1 minus 8, 10 multiply 0 0, 6 multiply 1 6 and 2 multiply 2 4. Okay, so according to the formula we have a need of total f d dash column minus 8 and minus 8 minus 16 plus 10 means minus का 6 आ जाएगा। Now we have a need of total frequency column 4 plus 8 12, 12 plus 10 22 plus 6 28 plus 2 30। Now these values put in the formula. A value is 25 plus the total of sigma at the dash column is minus 6 upon and the total of frequency column is 30 into c value is 10. So mean is equal to 25. When we calculate this becomes minus 2। जब हम ब्रैकेट को लिख दो प्लस माइनस माइनस 2 मींस मीन वैल्यू इज 23 मार्क्स, 23 मार्क्स। So today we discuss the two special cases. First is cumulative frequency distribution. In this we understand when the class interval is given like less than to 10, less than 20, less than 30 and like more than 0, more than 10, more than 20. And the second special case is when the mean value are given. When there is a mean value of class interval is already given, then we calculate the mean as same like the discrete series। जैसे कि हम discrete series में मीन को कैलकुलेट कर रहे थे सेम उसी सीरीज में हम क्या करेंगे, इसमें भी मीन को कैलकुलेट करेंगे। So mean it means we applying the same formula for calculating mean inside mean while we calculating mean in the discrete series। जब हम discrete series में जो formula यूज करते थे मीन को कैलकुलेट करने के लिए सेम formula हम यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे। Okay, so for today class it is sufficient. Thank you class, and in next lecture we discuss that there are three special cases: inclusive class interval, open end series and unequal class interval. Thank you class.